Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. मेरी आवाज आ रही है आपको ना? Yes, sir. Okay. So just within 1 or 2 minutes we are starting. Let others join. I think you are able to see the blank sheet right now. Yes. Okay, we shall start on this sheet only, right? We shall be asking something from you, and I would request each and every person who has joined to get your calculators ready on your table. Little bit, we'll be using it. क्या भैया? और बार बार सभी से पूछूंगा तो सभी का आना चाहिए आंसर। कुछ मुश्किल नहीं। 2 into 2 क्या होता है? 5 into 5 क्या होता है? We will wait for another 1 minute. It's 10:45, 10:46. We shall start. ठीक है बात है नहीं दे रहा है अगला बोला जिसमें जगदीप की पर इन्फॉर्मेशन विशाल जी आवाज अपना बंद कर लें विशाल जी। आजो ना ना सर नितेश सर बोल रहे हैं कि जो ये एटीआर है इसके अकॉर्डिंग ये होने चाहिए 100। विशाल सर और ये लगेंगे 18-19 में। विशाल सर ये एटीआर है एक इसके अकॉर्डिंग So welcome back. We are starting right now. I don't see any student is waiting outside. Right now we are having only 12 students who have joined. That is not very healthy. Anyhow, those who have not joined, we shall be calling Vishal sir. We shall be calling them after the the lecture is over. Okay. Once again, good morning. Somebody should respond if my voice is clear. Yes, Good sir. morning, sir. Okay. Good morning. So let us start without wasting any more time. So we'll just try to cover or try to solve 1 or 2 numericals based upon the things that we have done so that you're not left behind. Some of the things we are yet to cover as far as the fundamental things are concerned, but जो अभी अब तक हमने cover किया उसके ऊपर let's do very simple numerical, right? For example, write a statement here and just show you the statement here. Okay. Can you see the screen right now? Yes, sir. Visible. Okay. So this is very simple numerical. Hello. You might have done earlier as well. You just try to read the statement. A tensile test was performed on a mild steel bar. अब कहाँ है सर्टिफिकेट सर क्या कह रहा है वो ये ना आपका माइक ऑन है अभी तो उसका जगदीप बोल रही यार अभी इसमें हेलो राइट this is simple numerical we'll just try to resolve and yesterday we had discussed that modulus of elasticity is given by stress is given by p upon a and divided by strain and strain is given by delta l upon l. We are talking about the direct stress, right? So based on this basic fundamental formula, we shall try to solve the numerical this one. Before I read the statement, just try to check that this formula can also be written as E is equal to this P upon A is stress. This can be written as small p
and delta L upon L can be written as small e. This is another variation that we shall be using of the same formula, right? And this formula can also be written as P, that is small p, that is stress, and delta L upon L, right? And if you work out the delta L from here, this formula we can write it as delta L is equal to small p into L upon E, right? So you do not have to worry about this variation if you are clear about this basic fundamental formula which is written at the top, right? So we're using this basic formula of modulus of elasticity. We'll try to solve this symmetry, right? So the tensile test was performed on a mild steel bar. The following data were, आप अपनी अपनी copies ले लेंगे, साथ में pen ले लेंगे. I will try to solve this for me, right? The diameter of the steel bar is 3 centimeter. That means what is given? 3 centimeters. The diameter of the bar is given. That if you see this formula, what actually we can get it from this information? Length. Diameter से length Sir, कैसे? area. Right? So we can work it out, the area from this. So whenever you try to, just try to listen to me very carefully. Whenever you read some statement, so try to get the information from the statement and then try, based on that information, try to correlate things that you remember within your mind कि इस स्टेटमेंट के बेस पे कौन सा फार्मूला किस तरह से लगेगा. सो हर एक चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है. A tensile test is conducted. That means the nature of the force is tension, right? टेंशन होगा तो इलोंगेशन होगा. इलोंगेशन होगा मीन्स लेंथ उसकी बढ़ेगी, राइट? दिस इज इंफॉर्मेशन. ऑन ए माइल्ड स्टील बार दैट मीन्स मटेरियल इज गिवन. मटेरियल के हिसाब से हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी होगी या हमें कैलकुलेट करनी होगी, right? Now try to read this. Diameter of the bar, that means 3 centimeters there. Also focus on the unit. It is in centimeters, right? The length of the bar is also given. That means पहले तो उनको नोटेशन दे दें. दिस इज स्मॉल डी. लेंथ ऑफ द बार इज एल, दैट इज 20 centimeter. Load at elastic limit 250 kilonewton, right? So because we shall be solving the numericals in Newton and millimeters, Newton and millimeter. So convert each and every parameter into Newton and the dimension units into millimeters. So this is 250 into 10 raised to power 3. This is Newton, right? The extension at a load of 150 kilonewton. कि जब लोड 150 किलो न्यूटन था उस टाइम ये एक्सटेंशन जो लेंथ बढ़ गई थी दैट वाज 0.21 mm. दैट मींस डेल्टा एल दिया गया है हमें एट द लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन, राइट? द मैक्सिमम लोड, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो हमने बनाया था, कि मैक्सिमम लोड इज दिस. द मैक्सिमम लोड जो बार के ऊपर लगाया गया दैट वाज 380 किलो न्यूटन. टोटल एक्सटेंशन 60 mm. पूरा लोड लगाने के बाद जितनी एक्सटेंशन हुई दैट वाज 60 mm. डायमीटर ऑफ द रॉड एट द फेलियर. फेलियर यहाँ पे हुआ जब रॉड जो है ब्रेक होगी यहाँ पे. दिस at this point diameter naturally rod initial diameter was 3 mm, 3 centimeter 30 mm. अब जो रह गया 2.25 mm. दैट मींस नेकिंग हो गई, पतला हो गया. तो दिस इज द फाइनल cross sectional area at the failure. So what we have to calculate is Young's modulus of elasticity, that is E. This we have to calculate. Stress at elastic limit, that is small p, we have to calculate. The percentage elongation, कि कितना लेंथ बढ़ गया है, पहले कितना था, कितना परसेंटेज इसकी लंबाई जो है बढ़ी है. एंड परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया. नेचुरली लेंथ बढ़ी है तो एरिया कम हुआ है. तो ये चार चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, राइट? सो वी ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. इतना सा कर लेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी. Shall we start? Shall we start? Yes, sir. Okay. So first of all, start with the Young's modulus of elasticity.
तो यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, अब मैं साथ साथ में आपकी ब्लैंक शीट पे लिखता भी जाऊंगा, आप मेरे को साथ साथ कैलकुलेशन करके आंसर देते जाएंगे, आपका काम सिर्फ इतना ही है, राइट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, this is a question of simple stress and strain. So whenever you read a statement in your question paper, always check that which topic or the which subject this question may belong to, right? इतना जब आपको क्लियर हो जाएगा, then try to get into the details of it. So I'm just opening one sheet here in parallel, blank sheet. So let us start. So this is the blank sheet. तो हमें, मैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देता हूँ. So we have to calculate E, modulus of elasticity. And modulus of elasticity is given by stress over strain. तो given quantities जो है वो सबसे पहले हमने लिख लेनी है. What is given in the question? The given in the question is diameter. Diameter at initial diameter, that is 3 centimeter, and that is equal to 30 millimeter. So from this information we can get the cross sectional area. Cross sectional area. So this is equal to 5 by 4 into 30 square, right? Mm. You may solve it, you may not solve it, just keep it as it is, because all the calculations we can get it. So पूछा क्या गया, to calculate E कैलकुलेट करना हमने ना, तो E कैलकुलेट करने के लिए हमें स्ट्रेस भी ढूंढना पड़ेगा, स्ट्रेन भी ढूंढना पड़ेगा. So from this information, stress is equal to load divided by area, right? So what is the stress? If you see this numerical, this is statement, load at elastic limit is 250. Extension of the rod at 150. Just read this. इस 150 kg पे हमें डेल्टा एल दिया गया, right? So we can work it out at this extension of at a load of 150. क्योंकि अगर 250 के हिसाब से चलेंगे तो उस हिसाब से हमें बाकी पैरामीटर क्लियर नहीं है, right? तो extension at P is equal to 150 is equal to how much? 0.21 mm, right? So according to P is equal to 150, the area of the rod जब within elastic limit है, तो we should take the area as the original area. Area of the rod is this much. So put over here, now calculate this 30 square. So get me this value. This will be in Newton per millimeter square. सर ये 150 क्यों लिया? 150 मैंने अभी बताया ना आपको. अभी ये this is the test, right? This is strain and this is stress. So we are somewhere here, straight line, right? The elastic limit जहाँ पे है, that load is 250. So we have taken 150 somewhere here, क्योंकि उस point पे हमें strain भी पता है. Got it? अगर ये 150 है, that P, at this point the strain is also given, that means the extension is also given. The extension is 0.2 m, because we have to calculate E, and E is equal to P divided by E into delta L upon L. If you have to calculate E, so we need this value, and corresponding to this we need delta L as well. L already is given, area is given, so we can calculate this E, right? If we take this P as 250, then delta L is not known.
गॉट इट? Yes, sir. हाँ, तो अब 150 के ऊपर हमें डेल्टा एल पता है, इसलिए इसको सिंपली हम सीधे वैल्यूज डालेंगे, वी कैन कैलकुलेट इट। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, अब इसी फॉर्मूले में डाल दो सारा कुछ। 150 इज इंटू 10⁻³ बिकॉज इट इज इन किलो न्यूटन, हमने न्यूटन में लेना है। एल इज इन, एल की कितना डायमेंशन है? एल इज 20 सेंटीमीटर, 20 राइट? मैंने आपको बोला था वैल्यूज लिख लो। एल इज 20, दिस इज 200, मीन्स 200 mm। एरिया कैलकुलेट कर लिया हमने, ये वाला 5/4 इंटू 30 स्क्वायर, एंड डेल्टा एल 150 के ऊपर डेल्टा इज गिवन 0.2 mm, राइट? सो कैलकुलेट दिस वैल्यू। अब इसी को सॉल्व कर लो, कितना है? कर रहे हैं कैलकुलेट कि नहीं कर रहे हैं? Yes, sir. Wait. So 2.02 into 10 raised to power 5. 2.02 इंटू 10⁻⁵, साथ में यूनिट्स Newton per meter mm square. न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट? सो दिस इज द वैल्यू। आप ध्यान रखें, इन केस मान के चलें कि आपकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद किसी वजह से गलत कैलकुलेशन हो जाती है, ये वैल्यू आपकी आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 5 इंटू 10⁻⁶, बाई चांस मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, मेरी वैल्यू इतनी आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए इतना कि ये वैल्यू गलत है, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर इन माय कैलकुलेशन। क्योंकि आपको याद होगा कल हमने वैल्यू लिखी थी स्टील की, स्टील की जो, क्योंकि मटेरियल आपको दिया है क्वेश्चन में, दैट इज माइल्ड स्टील, समझ रहे हैं आप? माइल्ड स्टील की वैल्यू जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर इन जनरल, इसके अराउंड रहती है। एक सेकेंड होल्ड करें सर जी, मैं कॉल करता हूँ, मैं क्लास में हूँ, मैं करता हूँ आधे घंटे में। थैंक यू, थैंक यू। राइट, सो दैट मीन्स जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 2.02 इज करेक्ट, राइट? तो ये होता है, जैसे होता है कि 2 + 2 जब करेंगे तो 4 ही होगा, अगर 5 आ रहा है दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। सो दिस वैल्यू इज ओके, सो दिस इज द फर्स्ट आंसर दैट वाज रिक्वायर्ड, वेरी सिंपल, इसमें कोई खास नहीं है, राइट? सो this is answer number 1. So what was the answer number? Question number 2. Go back to statement. The second is stress at elastic limit. Stress at elastic limit. इसको हमने ढूंढना। तो stress at elastic limit. I use the same formula. Elastic limit means अब हमने इस पॉइंट पे सीधी डायग्राम, इस पॉइंट पे जो रेड में मार्क कर रहा हूँ, the load over here is 250, right? So stress at elastic limit is load at elastic limit into 10⁻³ this is P divided by area, as simple as that. तो एरिया तो पता ही आपको, कितना एरिया? 5/4 30, 706.874. कितना है? कितनी वैल्यू है बेटा? अब ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट बता दो, ये वाला 706.8574 एरिया का वैल्यू से। नहीं, एरिया नहीं, जस्ट डू वन टाइम कैलकुलेशन, ये भी मैं आपको बता दूं जस्ट टू 3.53 into 10 raised to power 2.
Just to save the time, do not do some minor calculations in the, separately because that will take time. अगर एरिया को सेपरेटली कैलकुलेट कर लेंगे unless until it is not required, अब इसी पूरे फार्मूले को हमने एक ही बार कैलकुलेट किया, we'll get the answer at one time, right? So this अभी इसी फार्मूले को पूरा वर्कआउट कर लेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा क्योंकि आपने कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करनी है. कितना है? 3.53 into 10 raised to power 2. 3.53 into 10 raised to power 2 units. Newton per mm square. Newton per mm square, because everything we are doing it in Newton per mm square, right? तो ये आप एक methodology बना लेंगे कि you just make it a point that you solve all the numericals in Newton and mm unless until it is required or asked by certain statement in the question itself. So what was the third? Third question was the percentage elongation. तो percentage ढूंढना तो आपको आता है, right? तो percentage elongation के लिए आपको टोटल इंक्रीज इन लेंथ ढूंढना पड़ेगा, राइट? तो टोटल इंक्रीज इन लेंथ कितना है? तो परसेंटेज elongation इज सिंपल कि जितना लेंथ आपकी बड़ी है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, राइट? दैट विल गिव यू द टोटल elongation. तो व्हाट इज द टोटल elongation? कैसे करेंगे? 60 mm. 60 mm, ठीक है. दिस इज 60 mm. ओरिजिनल लेंथ इज, the percentage elongation is total change in length divided by original length multiplied by 100, because it is asked 60 mm divided by original length. Original length कितनी है? 200 mm. 200 into 100, right? कितना हुआ? 30%. 30%. इतनी लेंथ जो है बड़ी है. Clear? So what was the next question? D, the percentage decrease in area. Diameter at failure is 2.25 mm. Diameter at the beginning was 30 mm, right? At the end it was 22.5 mm. So percentage decrease, same. Percentage decrease in area, right? Original area minus final area divided by original area. Simple percentage formula multiplied by 100. So this is 5/4, तो कॉमन ही आ जाएगा आपका, राइट? ओरिजिनल एरिया कितना है? ओरिजिनल डायमेंशन कितनी थी डी की? 30 mm. 30, राइट? माइनस फाइनल की कितना था? 22.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 स्क्वायर इनटू 100. इसको सॉल्व कर लो, कितना है देखो. 43.7%. एनीबॉडी एल्स? आई जस्ट नीड टू चेक कि जो लिखने की है वो सही है कि नहीं. Sir, sorry, 34.3%. अभी दो आंसर आ गए. 34.3%. 3%. पहले कितना आया था? सर वो π/4 एक्सक्लूड कर दिया था, इसलिए वो पिछला गलत आया. और π/4 तो नीचे भी है बेटा, वो तो कैंसिल हो जाएगा ना. फिर 43 आएगा. But do not do wrong calculation. This is simple mathematics. अभी इसलिए पूछ रहा हूँ, और किसने किया?
Sakshi, So just doing. क्लियर? तो आप कर लें बेटा। जब मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैनी टाइम्स वी डू रॉन्ग कैलकुलेशन फॉर सम रीजन, एंड द रीजन इज नथिंग बट द लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कैलकुलेशन में भी आपको चाहिए, बिकॉज इट विल सेव द टाइम एज वेल। अगर आपको कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम, एक सिंपल कैलकुलेशन करने का बहुत टाइम लगेगा। आई थिंक अगर आपको प्रैक्टिस है तो इस कैलकुलेशन को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगने चाहिए। ठीक है? दैट मीन्स यू नीड सम प्रैक्टिस। आई एम नॉट सेइंग कि आप अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपको करने चाहिए 10 सेकंड में। इन केस So 43.7. फाइन, गुड। तो अभी अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टाइमलाइन बताऊं, अभी हमने इसके ऊपर कम से कम 20 या 25 मिनट लगा दिए हैं, राइट? इन केस एक क्वेश्चन आपको क्लास में या एग्जाम में आता है तो दिस क्वेश्चन शैल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। समझे मेरी बात? तो इसका मतलब 5 मिनट में इसको करने में एक पहले दिन नहीं होगा। जब आपको 5 मिनट तब लगेंगे जब आपको फॉर्मूला याद है, आपका कैलकुलेशन और कैलकुलेटर पे जो स्पीड है वो आपकी अच्छी, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू इट। क्लियर? तो सिंपल न्यूमेरिकल था, इसमें कोई समझने की प्रॉब्लम तो आई नहीं, राइट? द फॉर्मूला दैट वी आर यूज इन दिस वेरी, मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। मैंने कल भी कहा था जब स्ट्रेस की बात करें इसका मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस, राइट? तो इसको हम P अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, इसमें से अगर एक्सटेंशन का फॉर्मूला हमने वर्कआउट करना हो तो दिस इज इक्वल टू P इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। सो ये फार्मूला हम बार बार यूज करेंगे, ये रिमेंबर इट। क्लियर? ठीक है? आर यू क्लियर? इसमें कोई Yes, प्रॉब्लम sir. तो नहीं है, राइट? तो एक सिंपल सा Yes, sir. फार्मूला और लिखें, नॉट फार्मूला, मैं यहाँ पे शीट पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दिस, ये शीट मैंने आपको शेयर कर देनी है बाद में। द अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर ए हॉलो, एक, again I am repeating, try to read each and every word written in this statement very clearly. Every word written in this statement has some meaning and try to get the information out of that. The ultimate stress means जब ये कर्व ड्रॉ करेंगे आपको तो ये वाला जो स्ट्रेस है, दिस इज अल्टीमेट, राइट, ऑफ ए हॉलो स्टील कॉलम। हॉलो मीन्स एक कॉलम है, कॉलम हम बोलते हैं एक पिलर को, जनरल टर्म, राइट, वर्टिकल मेंबर। हॉलो है which carries an axial load means direct load of 1.9 mega newton, right? The stress is 480 newton per mm square. If the external diameter of the column is 200 mm, determine the internal diameter. Take the factor of safety as 4. इसमें एक चीज और सीखेंगे हम लोग, तो just read this statement. अब ultimate stress is 480 newton, right? अब इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ लगे आपको? एक पाइप है और बीच में से हॉलो है, दैट मीन उसकी कुछ थिकनेस है मटेरियल की। अगर इसको ड्रॉ करूं तो मैं इट्स लाइक दिस, दिस इज द वॉल और द थिकनेस ऑफ द पाइप और द कॉलम। इसका जो इंटरनल डायमीटर जो है वो, लेट मी चेंज द कलर, दिस इज डी एंड एक्सटर्नल डायमीटर इज गिवन, दैट इज कैपिटल डी। क्लियर? And load is applied, actually means load is acting at the center, right? The external diameter is given,
that is 200 mm. That means capital D is 200 mm. So we have to calculate this D, small d. Clear? And load is given, that actual load P is given 1.9 mega Newton. Mega Newton is how much? कल हमने लिखा था mega Newton is 10 raised to the power 6 Newton, right? Kilonewton is 10 raised 10 to to the the power power 3 3. Newton. And generally we use three terms, mega, kilo and giga, right? Generally. तो ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 4. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक नई टर्म है आपके लिए अभी स्टेज पे. तो फैक्टर सेफ्टी इज गिवन कि ज्यादा से ज्यादा जो मेंबर है वो अल्टीमेट लोड जो है, इफ यू लुक एट दिस फिगर, दिस अल्टीमेट लोड इज 480. तो इसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे दैट विल गिव यू द वर्किंग लोड, कि इतना लोड जो है सेफली वो कॉलम ले सकता है. दिस विल बी 480, दैट इज अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय 4. ठीक है. तो ultimate load divided by factor of safety, that shall give you the working load. So we'll try to solve it right now. So based upon the information that is given to you, right? So let us start. This is the blank sheet. The question number 2. फिगर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी. अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में बनाएंगे तो the column is like this, because it's a circular column, diameter is given. Internal diameter is, this dimension is to be calculated. External diameter आपको दिया है, that is D is equal to कितना है? 200 mm. Clear? And the ultimate load is given. Ultimate stress, not the load. Ultimate stress, that small p is equal to 480 Newton per mm square. Actual load, that is 1.9 mega Newton, that is equal to 1.9 into 10 raised to the power 6 Newton, right? This is the exact way of doing the question. जितनी information दी गई है वो साइड पे लिख लें. External dia, that is capital D, that is equal to 200 mm. Small dia, internal dia, that is to be calculated. ये हमने ढूंढना है, right? The area of the column is 5/4. हॉलो का एरिया होता है d square external dia minus. Clear? So we can write it as 5/4 200 square minus d square. ये हमने इसमें से जब अप्लाई करेंगे फार्मूला वही रहेगा. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको गिवन है, so we can work it out. This is ultimate stress. Factor of safety is 4. फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, that factor of safety is the ultimate load. अगर हम इसको लिखें, factor of safety is equal to ultimate load or stress divided by working load, right? तो वर्किंग लोड को कैलकुलेट करने के लिए, वर्किंग लोड इज द लोड विच इज विद इन द इलास्टिक लिमिट. दिस इज अल्टीमेट लोड और स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो अल्टीमेट स्ट्रेस इज 480. सो वी वर्किंग स्ट्रेस यहाँ से वर्कआउट कर लेंगे हम. वर्किंग स्ट्रेस that is within the elastic limit, small p is equal to ultimate stress divided by factor of safety. So ultimate stress is 480 divided by 4. This will coming out to 120 Newton per mm square. So this was the only variation in the numerical. हमें ये पता चल गया, right? So now using the same conventional formula, that stress is given by, so because we are using small p is equal to total load divided by area, right? अब इस फार्मूले में से P is given,
How much is P? 1.9 into 10 raised to power 6. Area, is this much, right? 5 by 4, 200 square minus d square is equal to this P. And this is P working. So ये वाली value यहाँ लिखेंगे 120. Now solve this. अब एक ही अननोन रह गया इसमें. You can very easily find out the value of D. देखें तो कितना है? कर रहे हैं? वर्कआउट कर रहे हैं बेटा? Yes, sir. जल्दी से. आपको वैसे बता दे तो 5 by 4 to speed up the things you can always use this value as 0.78. ये आप याद रखें. 5 by 4. Just to put it on the calculator, always use this value as 0.78. Sir, 140.8. लिख लेता हूँ मैं साइड पे. Let somebody else calculate. आपने बोला है 140.8. 8. Sir, 140.82. ठीक है 140.82. 2 डेसिमल पे कैलकुलेट किया करें. एंड व्हाट आर द यूनिट्स? Millimeter. मिलीमीटर. अब 2 ही लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है. Yes, sir, I'm calculating. नाम बुला के पूछूं फिर? So it is up to you. मैं थोड़ा सा कभी कभी पूछूंगा अभी क्या. So what is the thickness of the material of the column? बता पाएगा कोई? अगर मैं पूछूं, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, थिकनेस ऑफ ये Sir, वाला. outer diameter minus inner diameter. Right. So instead of asking calculate the internal diameter, the question can be calculate the thickness of the material. So this is d minus small d divided by, डिवाइड होगा किसी के साथ कि नहीं? ये कॉलम है ना आपका. दिस डिमेंशन इज d एंड दिस डिमेंशन इज कैपिटल D. जब इसमें से तो माइनस करेंगे तो थिकनेस तो दोनों तरफ से आएगी ना. Divide by 2. हाँ, तो ये थिकनेस है हमारी. दिस इज t, दिस इज t. तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अब आ गया आपका 200 minus 140.82 divided by 2. You can calculate the thickness of the material. कितना आया? 30 से कम आएगा थोड़ा सा. 29.59. कितना है? 29.59. 29.59 mm, right?
So this is the answer in another formation. This question can be asked. इनके अभी I'm just telling you the fundamental. अगर आपकी कैलकुलेशन करने के बाद you look at this figure 148.8. अगर आपकी कैलकुलेशन करने के बाद दिस वैल्यू अगर आपकी 225 आ जाती, कहीं पे कैलकुलेशन गलत होगी, गुना तकसीम गलत हो गया, तो आप इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? Because we are calculating the internal diameter. Internal diameter it has to be less than एक्सटर्नल का 200 200 से कम तो आएगी वैल्यू, है ना? तो ऐसा चेक भी कभी कभार कर लिया करते हैं, तो जस्ट टू चेक कि हमारी कैलकुलेशन सही है कि नहीं। क्लियर? तो दैट मीन्स अगर 200 से वैल्यू हमारी किसी वजह से गलत कैलकुलेशन होगी आ जाती है, तो वी शैल गो बैक एंड रीकैलकुलेट। गॉट इट? So these are the two simple numericals that we have done today. So based upon the basic, आप देखें ना इसमें भी हमने सिंपल स्ट्रेस का फार्मूला यूज किया, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। एक हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्कआउट कर लिया, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेस्ड अपॉन दिस डायग्राम ओनली, जब हम स्ट्रेस ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, राइट? तो ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको दोबारा, क्योंकि ये पिछली क्लास का काम है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। This point is failure, load at failure or stress at failure. This point is ultimate. साथ में stress या load लिखा हुआ है, right? And this point is elastic limit, right? And ये बीच में एक कर्व बनती है, and this is, अगर इसको broadly define करना हो तो ये पॉइंट है, this range is plastic range and this range is elastic range, right? And ये थोड़ा सा याद रखें, एंड कल को इसी टॉपिक को हम रिपीट करेंगे। सो देयर आर फ्यू वेरिएशंस इन द क्वेश्चंस एज वेल, सो विल ट्राई टू हैव दिस क्वेश्चन। अब ये है क्या ब्रॉड इस, अब इसमें इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, द फिगर ऑन द राइट हैंड साइड, इट हैज टू डिफरेंट, ये वाला जो मेंबर है इसका एरिया अलग है 2 सेंटीमीटर डायमीटर, जो नीचे है इसका 3 सेंटीमीटर डायमीटर। तो इस केस को कैसे सॉल्व करना है? सो विल डू दिस वन and also we'll try to do this one as well. इसमें भी this has different cross section, center में ये different cross section, this one has different cross section, the load is applied at the ends. So how to find and solve this question, right? So this is question of bars of varying cross section. एक कल हमने टॉपिक शुरू किया था lateral strain, modulus of rigidity, थर्ड था bulk modulus, फिर इसका रिलेशन जो आपको मैंने हैंड नोट्स दिए हैं उसमें ऑलरेडी है, आप उसको पढ़ के आएंगे कल। देन वी हैव अनदर टर्म दैट इज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन रेशियो की सिग्निफिकेंस भी कल हम चेक करेंगे। तो टुमारो वी विल बी हैविंग दिस टॉपिक प्लस 1 or 2 numericals. So there is a huge variation as far as the types of numericals are concerned. You have the book with you. Just read it and try to solve those numericals. And just change some dimensions in the figure. Do not change this modulus of elasticity as far as steel is concerned. बाकी value of length change कर लें, load change कर लें, उस हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। Try to solve at least 3 to 4 numericals a day of your own. That will help. Any questions from your side before we close the session? आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
आज मेरी क्लास में 18 स्टूडेंट्स हैं। उमंग चौहान, लेट अस मार्क द अटेंडेंस। उमंग चौहान, एक ही बार बोलूंगा। अवधेश ओवरी, पलविंदर सिंह, Palvinder present, sir. रोहित कुमार, Present, sir. साक्षी, Present, sir. यक्ष, यक्ष नहीं है। हरजोत सिंह, Present, sir. साहिल, प्रेजेंट सर। आदर्श, Present, sir. ओके, वेदांत इज नॉट हियर। कुशागर अत्री, Yes, sir. Yes, sir. Vedant, sir. ओके। Present, sir. अजय दिमान, Present, sir. चेतन, Present, sir. सूर्य राणा इज नॉट हियर। जतिन पानवर इज नॉट हियर। आर्यन, Present, sir. लक्ष्य गोस्वामी, Present. Present, sir. वंश, Sir, Lakshya present. Present, sir. राइट। पलविंदर सिंह, जो कुछ रह गया तो उमंग चौहान, सर नितिश नितेश, प्रेजेंट राइट, सर। Sir, Atish 252. फाइन। Palvinder present, sir. अभी देखिए सभी की आवाज निकल रही है, दैट मींस यू आर मोर वरीड अबाउट द अटेंडेंस। बीच बीच में नहीं बोलते हैं आप। एनी हाउ, कल कल मिलेंगे हम लोग। कल लेक्चर है हमारा Excuse me, sir. जी। Sir, 2252. हाँ बोले बोले। 3010. हो गया बेटा, हो गया। अब आपको Sir, क्वेश्चन attendance पूछ रही, sir. 2252. कोई नहीं, हो गया। मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, वो अटेंडेंस लग जाएगी। 3010. Yes. अभी को क्वेश्चन है तो पूछे, अदर देन अटेंडेंस। कैन वी क्लोज? यस सर। ओके, Yes, sir. कल हमारी क्लास शाम को है, 1 यस सर। बजकर 1:45। राइट। वी आर क्लोजिंग इट, थैंक यू।